મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂતના હસ્તે સિદ્ધપુર માર્કેટયાર્ડ ખાતે એક પેડ માં કે નામ અભિયાન હેઠળ 5100થી વધુ વૃક્ષોના રોપાઓનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરાયું। પર્યાવરણના સંતુલન માટે વૃક્ષારોપણનો સંકલ્પ લેવા અપીલ કરતા મંત્રી શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સમગ્ર વિશ્વમાં યોગની ઉજવણી શરૂ કરાવી દેશના પ્રાચીન સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરી છે। મંત્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત આજનો દિવસ 21મી જૂન એટલે योग दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबे भारतनी जे प्राचीन संस्कृति हती ए संस्कृति ने उजागर करी समग्र विश्व ने प्रेरणा आपी। 177 देश 2015 थी शुरुआत करीने आज समग्र विश्व योगा दिवस तरीके उजवे छे। एना भागरूपे सिद्धपुर मार्केटयार्डे माके नाम एक पेड़ नी शुरुआत अनेक फेर करी है। आजना आ सरस दिवसे 5100 रोपा लाईने समग्र मार्केटयार्डना वेपारीओ खेडूतो आजूबाजूनी संस्थाओ मारा बिलियाना भाईओ पण अने माध्यम बनावीने ए प्रकारनी अद्भुत व्यवस्था ज्यारे करी है त्यारे मैं बधाने कीधुं छे के एक व्यक्ति दीठ 422 आपणे छोड़ जोवे एना सामे आपणा 28 छे तो आपणे बधा बेलेन्स करीए ने एक व्यक्ति कम से कम 422 छोड़नुं एनी जीवननी अंदर संकल्प साथे पूर्ण करे एवी सौने विनंती करी छे। मने खातरी छे के चोक्कसपणे आ कार्यक्रम अने कार्य पूर्ण थशे।